So by adding the clay, फेस की शेप क्रिएट की जा रही है. आप देख सकते हैं कि चिन की साइड से और ऊपर हेड की तरफ से वो एक ओवल सा बना दिया गया है बस्ट के ऊपर. पहले एक प्लेन सिंपल बस्ट तैयार किया गया है. देन टूल्स की मदद से इसके ऊपर कार्विंग स्टार्ट की गई है. निशानात लगाकर कि किस जगह पे क्या आईज आएंगी, वहां से आईज की कार्विंग शुरू की. हर चीज को प्रॉपरली अलाइन करके उसकी प्रोपोर्शंस के साथ मेजर करके इस्तेमाल बनाया जा रहा है. हेड की शेप दी जा रही है. हाथों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है स्कल्पचर को बनाने के लिए. शेप ऑफ द चीक्स, हाउ टू फॉर्म देम. अब नोज और लिप्स को फॉर्म दी जा रही है. इसका एरिया डिफाइन किया जा रहा है विद मोल्डिंग द क्ले. अब उसके अंदर मजीद क्ले को ऐड करके उसकी शेप प्रॉपर बनाई जा रही है. अब लिप्स, पहले सेंटर से लिप्स को बनाकर और फिर टूल्स की मदद से उसको कार्व किया जा रहा है. Areas around the lips are more defined. Now he has started working on the eyes. थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया, उसके ऊपर क्ले लगाई. अब क्ले पिछली क्ले के साथ ज्यादा इजीली एडजस्ट हो जाएगी. Adding more clay. It will help him to make the eyebrows and execute the features. This is the time to work on the eyelids, some additional clay to enhance the area. Some tools are used to make it more perfect. See how the man is using his hands to give it a proper form. More details, more work, full focus and attention towards the sculpture, removing the extra pieces, worked on the eyebrows, make a texture over there, now working on the eyeballs. Since he had not worked on the eyeballs, it was the most missing part. But now, as the eyeballs are executed, it is giving it a very fine look.
a 3D look. Again, the man is using his hands. Now some lines are marked. To see the shape of the ear. Because of the lines, you can see कि दोनों जानिब ईयर एक ही तरह से और एक ही जगह पे प्लेस किए गए हैं. Now he is adding the clay to make the ears. Seems like it is so easy for him. And with practice, it will become even easier for you. He is adding the clay to add the details of the ear, using the tool to enhance the details. Here, wow, what a good use of the tool, that the ears come out of the clay and he gave it a good three-dimensional form. Although the ears were first separated were first fixed with the head, but now they are separated. Adding more lines. The benefit of using the clay is that कि आप उसके अंदर कोई भी lines लगाते हैं या even अगर कोई चीज़ खराब भी हो जाती है, you can always add some clay, you can always remove some clay. So here he is adding more clay. I'm working with the help of his hands to merge the clay. And to give it the proper shape. He has removed some of the clay. Giving it a final form. Do note the sculpture table or stool, which can be moved, and the sculptor don't need to move around the sculpture, but he is standing at one side and the table is moving.
Some more added. Nice. See how he's adding it? Some more clay is added over that texture. Now he's forming the hair. With the help of tools and hands, he's making the hair, giving it a nice fine look. And now you can look at the sculpture. Please note the video links of those two tutorials which I have shown you. I hope आपको अच्छे से ये स्कल्पचर की जो टेक्निक आपने दो देखी है समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा इससे पहले जो हमने मॉडर्न स्कल्पचर्स और मॉडर्न स्कल्प्टर्स के बारे में पढ़ा तो उसको प्लीज रिवाइज भी कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।